Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with today's topic list. Today is 1st of November. The first topic is centered to make attempt for All India Judicial Services, which was long pending. Now government is trying to start afresh when it comes to AIJS. Second is informal sector sank sharply in 2020-2021. Initiative for Indus River Dolphin. This is something which is important for your prelims examination. Climate Equity Monitor highlights the emission gap. This is a website. We'll discuss the detail about this as well. Now, getting nutrition back on the school table high. So this is an editorial from the Hindu. Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ questions. These questions would be based on current affairs to build a concept for you so that you can handle the prelims question easily. So without any further delay, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services. If you find this video helpful, do not forget to give a like button. Starting with the first news of the day, that is centered to make attempt for All India Judicial Services. This news is important for your General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sector. Also, it is important under same General Studies Paper 2 under the topic of the role of judiciary. So now let's understand the news in detail. Basically, if you see the background, the establishment of AIJS, that is All India Judicial Services, जो कि एक national level recruitment process होगी for the appointment of district judges. जिस तरह से UPSC काम करती है, उसी तरह से AIJS को बनाने की बात की गई थी. And the proposal was being floated by the central government a decade before, right? कुछ 10 साल पहले इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की, but still there's no reality in that, and we have not actually come to a conclusion that it should be formed or not. So center is trying to make a fresh attempt, government of India ने एक fresh attempt की है to build a consensus so that we can have a judicial services. By judicial services, I mean All India Judicial Services, which would be appointing the judges for the district and lower courts. Now the Union Law Minister would start persuasion, the consensus with the state and the contentious issues of All India Judicial Services. तो जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बिना कंसेंट की गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती है. सो द कंसेंट वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एज ऑफ नाउ इज बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में. Now the sources said that center is likely to place a proposal. जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो एक प्रपोजल लेकर के आएगी जब रिसेंट में भी मीटिंग होनी है नवंबर में with all the state and union territories to discuss the judicial infrastructure in lower judiciary. I have also discussed this news way back. अगर आपने नहीं देखा है, do check it out. So judicial infrastructure is again one of the biggest concern for government of India. तो उस समय जब नवंबर में डिस्कशन होगी उस पे इस बारे में भी बात होगी कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को स्टार्ट किया जाना चाहिए या नहीं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. जस्ट टू रिमाइंड यू, आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर देख लें. Now the law ministry is keen on bringing all states on board on the issues that is likely to initiate the fresh conversation with them. By them I mean the state as well as the union territories. This would be complemented by the central government, which would ask the state to give their consensus for all India judicially services, right? बैकग्राउंड की अगर बात करें how it actually started, अगर AIJS की बात करें, it was first mooted in 1950. This is way back in 1950 when the Law Commission was discussed during the Chief Justice Conference, right? ये बातें discuss की गई थी. Now the actual it started in January 2017 when then Law Minister at that point of time Union Law Minister was Mr. Ravi Shankar Prasad. So he held a meeting with Attorney General of India and Solicitor General of India. जितने भी secretaries थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लीगल अफेयर्स के, उनसे बातें की गई कि व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ द एज वुड बी देयर, नो द नंबर ऑफ एज
and attempts would be there. Selection criteria, qualification and reservation, everything were discussed. But at present, when I'm discussing this news, there's no broader roadmap that how government is going to execute this. However, एफिडेविट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ने जिसने अपोज किया है. So the state of West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh, Uttarakhand has opposed the formation of All India Judicial Services. In states ने support नहीं किया है, and after the meeting also, which was going to be held in November, यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, right? And their key concern क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? What are the reason being cited from all these states? They said that this is a dilution of federal structure and the proposal does not address the structural issues. जो lower judiciary में जो cases pending है, even low pay की भी issue है, बहुत सारे important aspects हैं when it comes to the efficiency of judiciary. So this is the reason being the state government is not cooperating with the center in terms of the formation of AIJS. Now, appointment in the lower judiciary की अगर बात करें, which is again very important for you to understand, आपके लिए जानना बहुत ही basically ज़रूरी है कि किस तरह से lower judiciary काम करती है. Under the constitution, the power to make appointment in the lower judiciary is vested with the state government. Again, a very important and significant point for prelims and polity part. Currently, the state conduct their own examination based on the vacancies as the rises. हर हाई कोर्ट अपने हिसाब से अपने ज़रूरत के हिसाब से वैकेंसीज निकालती हैं और उनके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं. While the several states, including the Trinamool Congress in the West Bengal, have opposed the creation of center services for the state judiciary, and the Supreme Court has expressed the positive view on this issue. Now, government के क्या stand है when it come to AIJS? Government ने अपनी stand clear किया and it said a proper framework for All India Judicial Service is essential and it is important to strengthen the overall judicial delivery system in our country. जो justice delivery system है हमारे country की उसको दुरुस्त करने के लिए we need to enhance the justice delivery system. The reason being the central government is coming up with the AIJS and especially at the district and subordinate court level. But to implement the framework, it is important कि जितने भी states और union territories हैं उनसे consensus लेनी होगी central government को. Basically, this is something which is essential. Now, if you talk about the language concern which was raised by some of the states, तो यहाँ पे एक ये बात कही गई है, एक reasons बताई गई है that the issue of regional language has been brought upon the AIJS, All India Judicial Services के जो लोग होंगे अगर ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम्स होती है तो सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेशंस होगी. हो सकता है जिस तरह से IAS काम करते हैं ना बेसिकली ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो लोग हैं IAS जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. सो दिस पीपल लर्न द लैंग्वेज. सपोज अगर कोई IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट है, इफ ही इज फ्रॉम केरला, सपोज ही इज फ्रॉम केरला एंड ही इज बीइंग selected for West Bengal, right? He is being selected for West Bengal, so he need to learn Bengali as a language. तो उसको जिस तरह से लैंग्वेज सिखाई जाती है अपने कार्डर की, उसी तरह से एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर को भी लैंग्वेज में ट्रेन की जाएगी. सो दिस इज द रीजन बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बार. वी आर अ कंट्री विच डाइवर्सिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस है हमारे कंट्रीज में, सो लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर. जिस तरह से IAS ऑफिसर्स को लैंग्वेज में ट्रेन की जाती है, व्हेन दे रीच मसूरी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है. हर एक ऑफिसर्स जिनको दूसरे स्टेट्स एलोकेट होते हैं अपने स्टेट मदर टंग का, they have to learn the language of the state, right? So this is a mandatory part which goes in Labasna. So the same would apply to the All India Judicial Services officer. Now, informal sector shrank sharply in 2020-2021. This is something which is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning and Mobilization. So बात करें SBI रिसर्च रिपोर्ट की, इन्होंने कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज सिग्नलिंग ग्रेटर शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, राइट? सो दिस इज व्हाट द SBI हैज टू कोट. और बताया गया है जो शेयर है इनफॉर्मल सेक्टर का इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज डिप्ड, कितनी परसेंटेज तक डिप हुई है. आई विल गिव यू एन आइडिया in the later part of the video. Now it continued to bear a burn of a pandemic adverse effect. जो pandemic की lockdown थी
उसकी एडवर्स इफेक्ट्स अब लोगों के इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी दिख रही है व्हेन वी आर कमिंग अप, वी आर बाउंडिंग बैक. So, informal economy की बात करें, they have shrunk not more than 20% of the economy output, और यहाँ पे about 52% तक रही थी in 2017-18. Now, there is a wide variation in the formalization level. Different sectors की अगर बात करें, SBI estimated that the informal economy is possibly at the maximum of 15% and 20% of the GDP. Right? These are some of the important data that was quoted by the SBI current report. Now, if you see basically about the sectors, particularly for 2017-18 to 2021, this is a graph which will give you a brief idea. This is for the agriculture, mining, manufacturing, utilities, construction can be seen. It's basically it is 35 to 40 now. Services, which was completely waived off. Basically जितने भी services, hotel और hospitality के sectors हैं, they have not performed well because the tourism was completely blocked during the entire pandemic. So you can get an idea from this graph. Impact on agriculture की बात करें, so the projection by the State Bank of India suggested that informal agriculture sector has shrunk up to 97.1%. Right? This is for the GVA 2017-18 की, और अब की अगर बात करें, this is 70 to 75. Driven by the increased penetration of Kisan Credit Card. Government ने जो KCC कार्ड दी है, this is acting as a credit card to farmer. It has helped to some larger extent to the farmers. Real estate की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा डिप देखी गई है, and the report estimated that about 1.2 lakh crore of cash uses has been formalized since the COVID-19 pandemic, right? So these are some of the important impacts that we can see in the real estate, agriculture, as well as some of the formalization of economy. अदर एस्टिमेशंस की अगर बात करें, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IMF, उनके पेपर ने कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA की अगर बात करें वाज 53.9 इन 2011-12, और उसमें मार्जिनली इंप्रूव देखी गई है ऑन 17-18, दैट इज 52.4. एंड एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ 2014, around 93% of the workforce have earned their livelihood in informal work. तो इस तरह के जो कुछ डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो थोड़ी पुरानी है डेटा, बट अगेन दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. द हाइएस्ट शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज देयर इन एग्रीकल्चर, which is holding a small and smaller fragment, right? So agriculture definitely is contributing to a larger share when it's come to the unorganized activities. Now, initiative for Indus River Dolphin, something which is important for General Studies Paper 3, conservation, environmental pollution and EIA. Also, ये जो इस तरह के टॉपिक्स हैं वो आपके जो स्टेट्स की इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होंगे. सो द सेंसस ऑफ वर्ल्ड मोस्ट थ्रेटन्ड सिटेशियंस जो हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन, उनके बारे में बात की गई. दिस इज सेट टू कमेंस एज विंटर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय सेंटर. अगर बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन की, एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है दैट इज फाउंड इन द रिवर ब्यास. हाउएवर, जो पंजाब की वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग है, उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए रिसर्च काफ़ी ज़्यादा पहले से चालू कर रखी है, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन कंजर्वेटिव मेजर्स वेयर दे कैन प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट ऑल्सो. सो नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द इंडस रिवर डॉल्फिन, बट एट द सेम टाइम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब is also doing their level best to ensure कि वहाँ की जो उनकी natural habitat है उनको भी उसी तरह से conserve किया जा सके. Now, World Wildlife Fund, they have announced the Dolphin Mitra program. ये दूसरे states के लिए, this is for उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उन्होंने Dolphin Mitra की initiatives भी लिए हुए हैं. So I have added this point to give an idea कि क्या क्या efforts जो है वो Dolphin conservation से ली जा रही है, right? So this is an point which is important for the state like उत्तर प्रदेश. बट आज की जो न्यूज़ है वहाँ पे हम पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसेंसस है उसके बारे में बात करेंगे. Now, what is Indus River Dolphin? I want to show you an image. You can see this is an image of Indus River Dolphin. Now, just have some points about this because this is going to be important for prelims, right? So, the Indus River Dolphin is classified as endangered. IUCN की status में endangered है. And it is believed to this dolphin as endemic to Pakistan. अगर बात करें, ये first observe की गई थी पंजाब की हरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. This name is again important. Many a times UPSC tend to ask you
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो रिवर से रिलेटेड हो, ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड हो, इस बार के आपने एग्जाम्स में देखा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए. सो मेक श्योर यू हैव ऑल द आइडिया, रिवर, ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन, एनी एडजेसेंट नेशनल पार्क विच इज पासिंग थ्रू. सिंस डिस्कवरी, जो इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें, इट इज बीइंग डन इन द पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और WWF की जो अपनी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है उनके साथ मिलकर के ये काम कर रहे हैं. द इंडस रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल ऑफ पंजाब in 2019. Again, very important points. In many state PCS, this type of question has been asked, right? I've already shown you this image of dolphin. Now move ahead with some important points regarding this animal. So this blind, ये points आपके prelims के लिए UPSC में काफी important है. They can live at least for 30 years, grow up to 2 meter in length, weight up to 100 kg, spend entire life in fresh water river, right? So these are some of the most prominent points that you must know. Climate equity monitor highlights the emission gap, something which is important for your general studies paper 2. Conservation, environmental pollution degradation and EIE, right? बात करें जिस तरह से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है COP26 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्लासगो, दिस इज इन स्कॉटलैंड UK. तो यहाँ पे जो रीसेंट मीटिंग होगी उसको लेकर के एक इंडियन वेबसाइट विच इज़ नेम्ड एज क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेटा दिए हैं रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, and for a country like India, it is guiding them that what should be the right approach and issues that India need to call for in the COVID, basically जो COP26 की meeting हो रही है. So this is a website which is being developed by MS Swaminathan Research Foundation. This is known as Climate Equity Monitor, CEM के भी नाम से जाना जाता है. You can visit their websites. It's a good website that will give you an idea how they are tracking everything, right? सो ग्लोबल इमिशंस डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया इस वेबसाइट्स ने. सो द डेटाबेस ऑफ द वेबसाइट शोज द डिस्पैरिटी बिटवीन द इमिशन बोथ बाय द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इवन वेस्टर्न यूरोप, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ नेट कार्बन डेट, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें लाइक इंडिया एंड चाइना, दे हैव नेट क्रेडिट ऑफ कार्बन. नाउ द की फैक्ट जो डेटाबेस ने हाईलाइट किया है इज ओनली दैट the developed country must commit a steeper target towards the curbing emissions for the developing countries. तो developed countries को जो अपनी commitment है वो दिखानी चाहिए developed countries के through, and the $100 billion of corpus that was being again a call from all developed countries that जितने भी developed countries हैं वो इसमें इस corpus में अपने amount को segregate करके contribute करें. This would be something which is again very important, right? अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे. Now the website focus on equality climate action for the data, evidence based perspective जो कि encourage करेगी discussion on the crucial issues with experts also, right? अभी जो COP26 होनी है उसमें जो PCC है, that is Paris Climate Change, उसकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगी, जहाँ पे अभी तक लैकिंग है उसके बारे में डिस्कस होगी, और COP26 की जो अपनी टारगेट है दैट वुड बी ऑल्सो गिवन टू ऑल कंट्रीज. इमिशन बाय इंडिया की अगर बात करें, इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन एनुअली और सिक्स लार्जेस्ट व्हेन इट कम टू द हिस्टोरिकल इमिशन, ये वेबसाइट्स ने बताया है. एंड व्हेन अकाउंटिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन इट इज अमंग द लोवेस्ट पर कैपिटा emitters. And this underlined India demands for the climate justice being the heart of the negotiation and its reluctance to agree for the net zero targets. सारे कंट्रीज ने, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया से कहा है कि आप अपने नेट जीरो टारगेट्स के हमें टाइम बताइए, बट इंडिया का कहना है कि वी आर नॉट इमिटिंग दैट मच कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज लाइक USA एंड अदर कंट्रीज, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज. तो वी नीड सम टाइम to set a target. Until and unless we are fully industrialized in terms of developing all our capacity, we cannot let you know what is the net zero target. But India ने global level पे promise की है कि very soon India would be the country which would have its net zero targets. Now getting nutrition back to the school high table, this is something which is again important, और ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए important है. Welfare schemes for the vulnerable section by the center and states.
And at the same time, it is also important for general studies paper 2 in issues related to development and management of health, right? दोनों जगह पे ये important है. तो इस पूरे एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की गई है. I've segregated 5 points for you, सब टॉपिक्स. दैट इज ट्रैकलिंग इंडियाज ट्रिपल बर्डन, सोशल फैक्टर्स की बात की गई है, नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, पीएम पोषण स्कीम और वे फॉरवर्ड. दिस टाइप ऑफ एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे as well as for the general studies paper 2 and even sometime in paper 3. तो आप इसको बहुत आराम से समझे. I will discuss in detail. और पूरे एडिटोरियल के थीम की बात की जाए तो चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड कोविड कंसर्न के बारे में बात की गई है. सो विद कोविड-19 रिड्यूसिंग, हर एक स्टेट्स ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने अपने स्कूल्स ओपन करेंगे, बट द फैक्ट इज दैट द चिल्ड्रंस आर स्टिल नॉट बीन वैक्सीनेटेड. सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ये है कि वैक्सीन तो जाइकोव डी बन गई है, जाइडस कैडिला ने बना दिया है, बट द वैक्सीनेशन प्रोसेस हैज नॉट ऑल स्टार्टेड. नाउ एज एन सोसाइटी वी नीड टू फोकस अपॉन द न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड. जो बच्चे के न्यूट्रिशन है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट इट कैन हैव अ गुड इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस, राइट? जो नए चैलेंजेस हैं उसे भी हमें ध्यान में रखना है. However, it is important to remember that even before the onset of COVID-19 pandemic, India was facing a significant nutritional challenges. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड के बाद, कोविड से पहले भी हमारी जो परफॉर्मेंस थी न्यूट्रिशनल चैलेंजेस में काफ़ी ज़्यादा हाई थी. तो यहाँ पे ट्रिपल बर्डन की बात की गई है. बाय ट्रिपल बर्डन आई मीन इंडिया पॉपुलेशन विच इज़ अंडर न्यूट्रिशन, ओवरवेट, ओबेसिटी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा है, विच इंक्लूड आयरन, जिंक, कैल्शियम एज वेल एज सेवरल वाइटामिन्स. तो ट्रिपल बर्डन ऑफ द मैल न्यूट्रिशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड एज वेल एज एड्रेस्ड. बट अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी भी रूरल इंडिया में वी आर स्टिल फेसिंग दिस चैलेंजेस वेयर द सॉल्यूशन हैज़ नॉट मेट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, दैट ड्यूरिंग दिस फेज they see a rapid growth of the body, right? तो इस डेवलपमेंट के फेज में बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए. एंड malnutrition in any form can put child and adolescents at the risk of compromised immunity function. सिर्फ बॉडी ग्रोथ में ही नहीं रुकावट आती है, एट द सेम टाइम योर इम्यून सिस्टम गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? एंड मेकिंग अ गुड इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस, राइट? दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छे रखते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep yourself healthy. Eat fruits, eat lots of vegetables that you can have, and focuses upon the seasonal fruits and vegetables. जिस भी रीजन से आप आते हैं वहाँ की जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको ज़रूर खाएं. Accordingly, it will help to boost your immune system, right? सोशल फैक्टर्स की अगर बात करें, टू अंडरस्टैंड एंड फोस्टर द चाइल्ड इम्यूनिटी, ये ज़रूरी है कि बच्चों की जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है, वो भी हो. बट आज के अर्बन एरियाज में देयर सम प्रॉब्लम. द मिडिल क्लास एंड एफ्लुएंट फैमिलीज, वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट को लेकर. इन द अर्बन सिटीज दे डू नॉट हैव मच पार्क, राइट? द पीपल कैन नॉट गो आउट ऑल्सो. तो डिक्रीज्ड फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी में भी गिरावट देखी गई है. And COVID-19 isolation and fatigue has led to the generalized stress, adding immunity challenge in children. और COVID-19 के बाद जिस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड की है, तो उस वजह से भी इम्यूनिटी चैलेंज बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी गई. Now, need for a balanced diet. This is something which is very crucial, not only for children or adolescents, for each and every individual belonging to any age group. एडिक्वेट बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमें जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जरूरत है, विथ ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जरूरतों को भी पूरा करना. टू कॉम्बैट द हिडन हंगर, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और डाइवर्स फूड सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, एक रेगुलर एक्टिविटीज, एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Adequate sleep, low screen time. After COVID-19, most of the children have their classes online, right? तो screen time काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, which is also impacting the eyes and mind of a children, right? Now, government ने PM पोषण स्कीम स्टार्ट की. दिस इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना. मिड डे मील की तरह ये सेट टू बोर्ड एंड स्टूडेंट ऑफ प्री लेवल्स एट द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को 450 कैलोरीज तक की एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी. 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 700
calorie and 20 protein for the upper primary children. तो अलग अलग प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ये कैलोरी सेट की गई. एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फोर्टिफाइड राइस के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. फोर्टिफाइड राइस हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड. एंड इन एडिशन monitoring of hemoglobin level of the school children is very important. जो nutritional experts हैं, they have said hemoglobin is very important to continuously monitor, focuses upon the nutritional garden as well as steps where we can prepare and reopen the schools. Now what is the way forward here? अगर good immunity की बात करें, so good immunity would lay the foundation for long term as well as well-being of an individual. ये काफ़ी ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी इम्यूनिटी लेवल को बरकरार रखे. There are a lot of vitamin C's, and even in the winter season, you got amlas and all other stuffs. The vitamin C rich foods, the vitamin rich foods will definitely enhance your immunity, right? And all good nutrition, safe food, positive lifestyles are the cornerstone of great immunity. बात करें अगर स्कूल की, there when they will be reopen, तो जितने भी टीचिंग है न्यूट्रिशनल्स को लेकर के वो भी उनको बताने की ज़रूरत है. एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड द स्टेट इंश्योर कि वो बच्चों को अच्छे से नर्चर करे और नरिश करे. एंड व्हेन दीज थिंग आर डन, वी हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग टू आवर चिल्ड्रन, राइट? सो दिस इज द वे फॉरवर्ड. अगर आपने एसे में लिखना है, इफ यू आर राइटिंग दिस इन मेंस पेपर, you can incorporate these important points. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For the second question, the correct option is C. Today's MCQ, PM Atmanirbhar Swasth Bharat scheme. It aims to provide healthcare insurance people for BPL families. और ये budget 2021-2022 में announce की गई थी. So what you have to do? You have to participate. How you can participate? You have to write your answer in the comment section. आप comment में अपने answers लिखेंगे. We'll see how many of you are writing the correct answer. Second, National Hydrogen Energy Mission. This will capitalize on hydrogen for a clean alternative fuel options, and it will focus on generation of hydrogen from the green power sources. Again, write your answer in the comment section and participate in the question answer series. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.